तो आपको ओपन करके फाइल्स ओपन में जाकर वो भी फाइल को देखने देना पड़ता है। आफ्टर दैट आपको एक फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ता है, वो जहाँ पर आपका वो सेपरेट इंस्ट्रक्शन होगी। फिर मैं फोल्डर दिखा दे रहा हूँ, आउटपुट हो रहा है माई इवन वर्क स्टेशन के वहाँ पर। So it's बहुत ईजी है इसको इंस्टॉल करने का। आपको हम आपको दिखा रहा है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, कौन सा साइट पर। तो आप गूगल में सर्च करने के बाद आप ऑटोमेटिकली तो मिल जाएगा साइट। तो आपको आज का इसे करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक दे दूँगा, गूगल ड्राइव का लिंक, so you can easily download it from this site. आपको बेसिक खोजना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पर जाओ और नेसेसरी लिंक मैं वहाँ पर डाल दूँगा। हाँ, गेट स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका डाउनलोड पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो मैं डायरेक्ट डाल दूँगा around this Palo Alto conversation tool is बिल्कुल फ्री, आपको पूरी लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा। बट जब आप कॉन्फ़िगर कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको Palo Alto पर लाइसेंस जरूर रहना पड़ेगा, because without that you cannot able to conversation this. So आपको डिवाइस Palo Alto डिवाइस must be registered on the pirates. Up में is good on a 150 hour. Yeah. On the install for I'll take some code. We install on. Yeah, it's installed on. Yeah. It's expectation, the username is experimentation and the password is Palo Alto. If configure is IP, the Windows IP is automatically DSV IP. Because in emails for hit cleaning, and we type Palo Alto password check around. Yeah. Okay. I did GUI interface again. Thank you.